So we come up with, okay, how we can, introduce different sexual toys if you're, if you have kind of different problems, that is you're obese, you have erectile dysfunction, a lot of stuff, so how you can, help them. The whole idea is कि चाहे हमें backlash आए, चाहे लोग हमें कोई एजेंडा समझ रहे हैं, but I want people to talk about such things that hit my mind कि सब चीज़ों को क्या drive करता है. And I'm like, okay, I understand, I get that, it is marriage institution. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नताशा और मैं हूँ शाम की चाय की होस्ट, जहाँ पे हम बहुत ही कूल पाकिस्तानियों की कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। ये हमारा सीज़न कोलैब से पावर हुआ है और हम पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स से बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप से बात कर रहे हैं, हम फाउंडर से बात कर रहे हैं और आज हमारे शो में आए हैं अगलब शेर खो। Thank you so much, Natasha, for inviting me. And what's up with this cool thing? I mean, well, I mean, I think Pakistanis are really cool. Or media mein, when you think of a Pakistani, you don't think of a cool person, right? You think of something totally different. And I was like, that's not cool. So I was like, hey, मुझे जो है बहुत जो incredible Pakistanis हैं जो कि अपने like internationally or even nationally, impact कर रहे हैं अपनी communities में, मैं उनको highlight करना चाहती हूँ, and that's why you're here. right, thank yes. you. I mean, like, okay, we all get it, we all No. Your journey is incredible. You went from filmmaking to startups. You're an NCA grad. You're a filmmaker. आपकी जो documentary है उसको international recognition भी मिल चुका है. And then you made a shift and you went into the matrimonial space with your Rukhsat matchmaking service. And so I want to start with that. What and why did you make a shift between film and startups? So basically, like in my circle, everybody has the same question straight away कि क्या ऐसा क्या हुआ है तो like all of a sudden shift हो गया. बिल्कुल. और specifically कि when you are stable, I mean, like you're getting projects and you can at least produce good things. I count myself in that. So, Yeah. So, but eventually, what was कि मैंने when I go back to like where I started from, that was the whole idea was कि I need to create value in what I do. बिल्कुल. और उसी वजह से photography I started, and then it became like I went into cinematography, then eventually started making documentaries. Right. So I started exploring different genres. So क्या कर रहा है and what exactly I'm getting out of it. Yeah. तो eventually which I realized कि सब चीज़ के पीछे ये था कि after completing a project मुझे क्या कुछ मिला है उसमें से या किसी को कुछ और उससे मिला है कि नहीं. Yes. So I always looked for not really fictional cinema. I was or into non-fiction, realistic projects, documentary stuff, so that how I can help the others. So I won't say like कि कोई philanthropic चल रही थी, but it was like a more of a meaning. Yes. So then it was like कि अच्छा चलें different projects try कर लिए, there's good reach, documentaries से educate कर लिए, but people who watch documentaries they're already educated enough. बिल्कुल. Right. Yes. So I was like, okay, I'm targeting a particular niche. So let's इससे बाहर निकलते हैं. ठीक है. And see how I can facilitate the masses. ठीक है. Then eventually I'm like started thinking, okay, what am I supposed to do with my life now? Right. Yeah, the age-old question. Yeah, exactly. So I'm like, I'm going to come up with something जिसमें पैसों के अलावा भी कुछ हो. चाहिए. Should be a kind of start में I was interested in e-commerce and like was planning to kind of build that. But eventually it hit my mind कि सब चीज़ों को क्या drive करता है. And I'm like, okay, I understand, I get that. It is marriage institution. Yes, it is. Everything is, interlinked to this. Of course, yeah. It's like whether it's like pre-marriage life, post-marriage life, we all are कहीं ना कहीं जाके यहीं पे ही fixed हैं. बिल्कुल. Parenting, childhood, सब कुछ develop ही हमें ये करती. And I'm like, I'll work on that. अच्छा. Then like I'm like working NC के time से ही on rukhsat.com का domain उस time पे मैंने लिया था. अच्छा, wow. तो बस it started. Yeah. And I found like I'm like honestly abhi currently even 2 days back I got registration from 45-year-old woman. She got divorced like 20 years ago. ठीक है. And her daughter registered for herself. That's incredible. I was Yeah. like Yes. मैंने कहा bro like that's like good enough for me. Yeah, I of mean, course. like, Yeah. I find it very meaningful. People are kind of opening up and they reach us. आपका जो मैट्रिमोनियल सर्विस है वो साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी पे फोकस करता है. हमारा जब आप माशरा देखते हैं, we don't
talk about that when we think about matchmaking. मज़हब देखा जाता है, शायद social status देखा जाता है, शक्ल सूरत देखी जाती है. So why don't you tell me why psychological compatibility is so important and why did you pick that to focus on specifically? राइट अच्छा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इन पाकिस्तान ये तो चीज़ ठीक है वी अंडरस्टैंड कि हम उस तरह से डेवलप नहीं हैं Yes. टू अंडरस्टैंड दिस Yeah. बट आई डोंट इवन सी इट ग्लोबली being used in the same Yes. matchmaking business, Yes. which is unfortunate because they all are very developed countries. They understand what mental health is. Yeah. Even if you're mentally fine, mentally healthy, you should still go for therapy. I mean, like, why not? You can just discuss. It is so important to know our own self, and then अगर हमें अपना ही नहीं पता then how will we able to find कि हमें क्या चाहिए. बिल्कुल. Then what we do is कि हमारे पास पूरी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है which is specifically उनको काफ़ी टाइम बाद we worked on projects मेयर्स ब्रिग्स की कुछ theories हैं. Yeah. Then there's this अगर उसको थोड़ा पीछे जाएं तो कार्ल जंग आ जाते हैं. बिल्कुल. तो डेफिनेटली तो पर्सनालिटी टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको डेटा हमने उसके अंदर काफ़ी काम करके वी कम अप विद दिस प्रोडक्ट कि जिसमें पर्सनालिटी टाइप को हम कंक्लूड कर लेते हैं. Oh, very nice. एंड आफ्टर दैट वी शो पीपल जो कि उस पर्सनालिटी टाइप के साथ कंपैटिबल हैं सो दैट वी कैन अगर स्केलेबल हमें जाना भी पड़े तो वी कैन बी वेरी सेग्रीगेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इवेंचुअली इवन दे कैन सीक हेल्प कि अच्छा. हमें कुछ फिगर आउट करने में कुछ लोगों को क्लियर ही नहीं होता. आई मीन लाइक इफ आई आस्क यू कैन मे बी टेल मी योर जनरल प्रेफरेंस के ओके आई नीड दैट काइंड ऑफ पार्टनर. सही है. बट इट डज नॉट मीन कि वो आपको क्लियर आपको समझ आ रही है कि आपको क्या चाहिए. तो व्हाट वी डू इज के साइकोलॉजिस्ट समहाउ टू नेविगेट दैट थिंग इट हेल्प्स. तो दैट वाज द होल प्रोडक्ट एंड वी आर वेरी स्पेसिफिक. वी डोंट टेक रजिस्ट्रेशन अंटिल यू गो थ्रू a session. Yeah. Complete ही नहीं कर पाते because we're not able to know that person. Right. Even like if I open any psychological report which psychologists provide me, Yeah. तो मैं उससे मिला नहीं होता but I know what kind of person is. Our whole product is designed in a way where we give a very personalized experience to each and every individual. That's amazing. आप इस space में, like you said, NCA की years से आपने ये सोचा था. So as you've seen the matrimonial space change over the last, like say, decade ले लें आप, how has that shifted Pakistani relationships? Like how have the relationship dynamics changed in Pakistan? Okay, right. So basically there's this coming there's a boom coming of अच्छा. different matrimonial apps. ठीक है. It started from different dating बिल्कुल, apps and there was a particular niche जो कि समझ पा रही होती. Maybe मैं institution के names नहीं लेना चाह रहा. हाँ, सही All है, are yeah. kind of exposed होते हैं. They Yeah. know कि what dynamics we are in. Yeah. Parents के साथ उनका भी generational gap बहुत ज़्यादा होता है. बिल्कुल, They go and explore बिल्कुल. क्योंकि उनको घर वालों की choices समझ नहीं आ रही होती. सही है. And they don't have any particular platform के जहाँ पे जाके they can get in touch. Right. तो what happens is कि they get exposed. तो अब इस तरह से investment के साथ different startups are coming up and the things are changing and people are getting exposed to that. ठीक है. अब there are a lot of people who are trusting and upload their pictures on matrimonial websites. बिल्कुल. पहले ये comfort नहीं होता था. हाँ, बिल्कुल. People were not even comfortable कि हम उसको social media पे भी upload करें. Of course. So now people are going that and that is also because of like I know a lot of people जिन्होंने out of desperation भी किया because they don't have any platform कि जिसके through वो properly अपनी privacy के concerns को रखते हुए भी इसको proceed कर सकें और इस चीज़ को जाके अपने लिए अच्छा कोई पार्टनर कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ सकें. तो दे हैव टू जस्ट बिकॉज आउट ऑफ डेस्पिरेशन बिकॉज एक स्टिग्मा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि कहीं 30 की बायोलॉजिकल क्लॉक लेट हुई नहीं तो हम कहीं लाइफ में पीछे रह गए. शादी करना इज अ मस्ट. दिस इज द एंड गोल फॉर सम पीपल. तो इसकी अनफॉर्चुनेट बट उसकी वजह से लोगों को इस पे एक्सपोज हो रहे हैं. डायनामिक्स आर चेंजिंग. पीपल आर ट्रस्टिंग कमिंग अप विद दिस थिंग्स but definitely with a lot of inconvenience which needs to be rectified. Yeah, that's awesome. And I think जो आप कर रहे हैं वो especially मेरे लिए बहुत interesting है because you have a whole studio arm. It's not just the product, it's conversations around relationships, right? And you guys talk about a lot of taboo topics. And so I want to tap into some of those taboo topics. के क्या आपके studio में topics आते हैं जो कि अब की generation, like, they're focusing on it, they want to talk about it, they're getting more open about it. Tell us a bit more about that. Right. So in Ruxat, that's like a matchmaking agency. And Ruxat in Wales is our studio. That in Wales means कि पर्दा हटाओ चीज़ों के ऊपर से talk about. Yeah. तो the whole idea is कि चाहे हमें backlash आए, चाहे लोग हमें कोई एजेंडा समझ रहे हैं,
but I want people to talk about such things. ठीक है, एक conversation initiate हो, of and course. this is more than enough for us. ठीक है. कि at least come up with an opinion, जी. not with a confused mindset. Right, Whether right. आप किसी side पे भी हैं, at least make an opinion, Yes. which will help you navigate, come up with like maybe future में growth होगी, you'll get to know कि अच्छा मैं यहाँ नहीं, अब मैं यहाँ हूँ. But डब्बे से बाहर निकलने की एक cost होती है, which बिल्कुल. everyone has to pay. Right. और वो पे करने के लिए कोई तैयार नहीं. Yeah, okay. And what we are doing is we are एक एंटिसिपेशन सी जनरेट हो रही है, सही. क्यूरियोसिटी से जनरेट हो रही है कि ये बात की है, ये बात तो ठीक है. हाँ. तो हम लोगों का यही है कि वी टॉक अबाउट प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, हाँ. sexual health related issues, mental health, and we specifically target those areas where people are not getting any information specifically related to our culture. बिल्कुल. There's a lot of information available out there कि हाँ. sexual health पे बहुत से लोग बात करते हैं, but बिल्कुल. specifically how we are designed culturally, उसमें रहते हुए how people will be able to navigate such things, Yes. कि आप कैसे comfort create करना है, how you are supposed to, कि arranged marriage की ratio बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है. तो how you are able to deal with that. ठीक है, एक general सा idea हो गया, okay सही है, हाँ. ठीक है, and when they will be like get married, Together, yeah. तो they might get disappointed with lot of other things as बिल्कुल. well. तो बिल्कुल. they need to address it, they need to make a bridge, तो Yes. उसको हम help out करते हैं. Yeah, yeah. And we are coming like in like अभी कल की in like conversation we talked about कि physical compatibility एक मर्द को usually यहाँ पे देखा जाता है financial stability से. Yes. It's generally all across the world. Right. That's yeah. That's not very just true. Pakistan. Yeah. Yeah. So उसमें एक physical compatibility में भी it could be a gap of 10 to 15 years. बिल्कुल. Right. Yes. बाहर तो US में if you target it, like I'll touch that area so that people should know कि किस context में बात हो रही है. बाहर if you'll touch तो लोगों ने अपनी एज का जो गैप है वो वैसे ही डिले कर लिया. 30 अबव पे जाके दे फाइंड लाइक ठीक है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलप होगी, नाउ विल गेट इनटू दैट. और एक डिंक जो यू विल बी फेमिलियर ऑफ के जिसमें लोग किड्स प्लान नहीं कर रहे, दे डोंट वांट इट कि हम बिल्कुल डुअल इनकम नो किड्स, राइट, नो किड्स. तो उस सिचुएशन उस माइंडसेट में आ गए हैं, तो दे डोंट रियली सी दैट, और उनके लिए सेपरेशन भी या डाइवोर्स भी कोई स्टिग्मा नहीं है. Yes. तो इधर इन पाकिस्तान व्हेन वी गेट इनटू दैट, Yeah. उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोगों को सब कुछ पता लग जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है, और वो 5 साल का गैप है, 10 साल का गैप है, हाँ. शायद बाल नहीं है उसके, फिजिकली हाँ, अट्रैक्टिव नहीं फील exactly, करते, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि नहीं को कारोबारी होना चाहिए, स्टेबल हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल, एंड देर एक्सपोज. अब Yeah. उनके अंदर कितने इश्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल. सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की मतलब बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो सकता है, बिल्कुल. एंड हाउ दे आर सपोज्ड टू नेविगेट. Yes. स्टिल दे नीड टू वर्क इट आउट, Yes. बिकॉज एक स्टिग्मा के घर से लाश ही आनी चाहिए, Yeah. होता है, वापसी पे बिल्कुल लाश होता ही है. आनी चाहिए, Yeah, yeah. एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दैट्स लाइक accepted nowhere, बिल्कुल. right? Yeah. So how we are going to help them, how we going to still navigate those things, so we talk about that. So we come up with कि how we can introduce different sexual toys if you're if you have kind of different problems, diseases, you're obese, you have erectile dysfunction, a lot of so how you can help them, still help them, you can still feel that bond, Of course. right? Yeah. So people need to accept that thing. Yeah, Might they not do, accept they to do, it. yeah, So we go to that area as well. Acha. That's a very, very interesting area to go to in Pakistan. How has the reception of that been? Uh, you can say कि I feel sometimes reluctant to kind of even post it just because of the personal. I'm also recently got married like Of course. a month Yeah, ago. yeah. And I'm Congratulations. like, thank you so much. Yeah. And eventually what happens is कि people, it takes hard to digest. But I've choose this field, I've choose this vision, and I'm so inclined towards that. Yeah. And I'll continue doing that. Yeah. And I'll get more into that. Yes. Even yes. the areas which people don't address usually, yeah, like yeah. globally as well. There are a lot of things. हर किसी का अपने अपने area में. बिल्कुल है, People are conservative. We all are conservative सब in है. different areas. Yes. Recently, what happened was the girl, she had like engagement for 2 years, ठीक and है. that broke up. ठीक है. अब स्टिग्मा ये है कि कल्चरली के अब घर वालों को टेंशन हो रही है, अब तो जल्दी बिल्कुल, शादी करवा करनी ही देनी करनी है, है, अब तो करवानी depression में करवानी है, चले ठीक है. जाएंगे, हाँ. अब व्हाट उसको क्या हो रहा है, शी माइट फेस रिजेक्शंस, Yes, 3 to बिल्कुल. 4 could depend on उनके लड़कों ने Of सिर्फ course. Yeah. खूबसूरती देख रहे हैं. Of course. Yeah. अब शी इज़ नॉट रेडी टू डू दैट. फैमिली आगे रजिस्ट्रेशन करवाने, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमें कुछ और पता लग रहा है, Yes. और इन फ्रंट ऑफ फैमिली उसके ओपिनियन कुछ और है. कुछ और है. So Yeah. this psychological assessment helps us navigate this thing also in That's our culture. incredible. Yeah. Right? Yeah. Yeah. And what we recommended her to take Yeah. time, to take sessions
because eventually उस individual की बात नहीं है, she'll get to that person also Of ना, course, so हाँ. she'll bring that energy to her, to him as well. हाँ. So it's like responsibility of all of us to Yeah. kind of come up with clear choices, what we Yeah. want in life and what we don't. हाँ. Take time, things बिल्कुल. take time, and even Yes. don't take things for granted after. Like even after get married, you're very happily married. Yes. People start taking it for granted. Yes. Yes, sir, we don't need to work on our relationship Yeah, of and course, stuff. yeah. उस लड़का हो गया तो फैलता जा रहा है, लड़की हो गई है तो उसको कोई कोई होश नहीं है, और उसको कोई अपना, क्योंकि बस ठीक है, Yeah, बस फेस अब तो को हो लाइक गई है. हनीमून पीरियड तक Yeah. सेट था, Yeah. but it doesn't work like that. We need to be conscious of our choices every day, Yeah. and it's a constant battle बिल्कुल है. every day. People think कि हमें एक लाइफ पार्टनर मिल गए, Yeah. we're taking for granted, हमें Yeah. emotionally, physically, they'll never cheat on us. Yeah. But we need to keep on working every Yeah, day, of course. every day, and we need to be conscious about it as Yes, well. कि yes. यार नहीं, we need to be grounded. Yeah. We need to be कि हमारी केक मिल गया, हमें टॉपिंग जरूरी नहीं है. Yeah, We need yeah. to be responsible. That's why marriage institution is. Otherwise, do not get married. Yeah. Keep on exploring. Of course. Keep working on yourself Right. emotionally, and that is not an end goal. Yeah. People who choose not to marry, that's still a smart choice to do. Yeah. Okay, no, that's wonderful. आपने हमारे साथ बहुत टाइम गुजारा. नहीं, I You love gave us- love how you kind of Yeah. keep on asking questions in the way specifically which is needed to be asked. Oh yeah, Good no, job with of course. that. No, thank you so much for spending so much time with us. I Thank you so appreciate it. much. Thank you. Yeah, Inviting. awesome. And thank you guys. आपने हमारा show देखा. Inshallah, I'll be back next time with another episode. Until then, Allah Hafiz.